प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेट द्वारका पहुंचा। बेट द्वारका मंदिर में प्रधानमंत्री दर्शन करशे। बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना करी। सीधा दृश्यों में आपने बतावी रह्या छे। बेट द्वारकाना आजाद भारतना इतिहास में पहली वार आवुं बन्युं छे। प्रधानमंत्री नतमस्तक थया। बेट द्वारका में तेमणे पूजा अर्चना करी अने हवे प्रधानमंत्रीना अलग अलग कार्यक्रमों अने त्यां पहोंचशे। एवुं कहेवाय छे के तमे द्वारका पहोंचो અને બેટ દ્વારકાના દર્શન ન કરો બેટ દ્વારકા તો એ દર્શન તમારા અધૂરા કહેવાય। આ દ્રશ્યો પ્રધાનમંત્રી નતમસ્તક થઈને દર્શન કર્યા। પ્રધાનમંત્રી મોદી સુદર્શન સેતુ પર પહોંચ્યા। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગુજરાતને આજે ભેટ આપી। પીએમ મોદીના હસ્તે સુદર્શન સેતુનું લોકાર્પણ। તો પ્રધાનમંત્રી મોદી બેટ દ્વારકામાં पूजा करी। प्रधानमंत्री मोदी सुदर्शन सेतु पर पहुंचा અને આપ જુઓ બેટ દ્વારકા કે જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મસ્તક કરીને દર્શન કર્યા। મંત્રોચ્ચાર સાથે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી અને આજે सुदर्शन ब्रिज है तमाम लोगों माटे हवे खुल्लो मूकवामां आव्यो छे। तो बेट द्वारका सीधा दृश्यों आपने बतावी रह्या छे। पावड़ी पूजन प्रधानमंत्रीए कर्युं अने त्यारबाद नतमस्तक थईने तेमणे पूजा करी। सीधा जयशु हितेन विटलाणी अमारी साथे लाइव जोड़ाई गया छे। हितेन, बेट द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करी नतमस्तक थईने आशीर्वाद लीधा। बिल्कुल जुओ आजाद भारत में दीक्षिता प्रथमवार कोई प्रधानमंत्री जे छे आपणा देशनो प्रधानमंत्री ते बेट द्वारका मंदिर पहोंच्या हता अने तेमणे लगभग अर्धो कलाक जेटली पूजापाठ जे छे त्यां करी हती। मंदिर में खास तैयारीओ करवामां आवी हती प्रधानमंत्रीना नरेंद्र मोदीना आगमनने लईने, कारण के वडाप्रधान प्राइम मिनिस्टर ते पहेलीवार आवी रह्या छे अने दर्शन करशे। कारण के बेट द्वारका विषे एवं कहेवाय छे के बेट द्वारका भगवान श्री कृष्णनु जे छे ते घर हतुं, एटले घरे प्रधानमंत्री दर्शन करवा आवी रह्या छे। तो निश्चित तौर पर तेमना माटे खास तैयारीओ हती। पूजापाठ नी विधिओ तेमना हस्ते कराववामां आवी। जे सवारनी आरती थाय छे ते आरती तेमना हस्ते कराववामां आवी अने त्यारबाद धजानी जे पूजा छे ते पण तेमना हस्ते कराववामां आवी। हाल हूँ शैलेषने कहीश के तमने तस्वीर बतावे। आ सामेनी तरफ जे तमे निहाळी रह्या छो ते सुदर्शन सेतु है। हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नो काफिलो जे छे ते सुदर्शन सेतु पर हाजर है। सुदर्शन सेतुनु निरीक्षण जे छे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोते करी रह्या छे। ज्यारे आ रस्ते तेमनो काफिलो रवाना थयो ते दरमियान तेमनी गाडीमां पीएमनी साथे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण हाजर हता। बंने वच्चे गंभीर डिस्कशन पण जे छे ते ब्रिजने लईने थई रह्युं हतुं। हालांकि मुख्यमंत्री ब्रिजनी आसपास जे आ सामेनी तरफ जे पार्किंग छे ते पार्किंग केटला गाड़ीओनी पार्किंगनी व्यवस्था माटे आ पार्किंगनो स्पेस बंने तरफ ब्रिजना पहली बाजू अने आ बाजू केवी रीते बनाववामां आव्यो छे। आ ब्रिजनी डिजाइन तो पीएमओ द्वारा ज अप्रूव करवामां आवी हती, पण 5 वर्ष लाग्यो छे आ ब्रिजने बनावता। तो 5 वर्षमां केटली मुसीबतो आवी, कारण के कोविड काळ पण आव्यो, ते दरमियान कन्स्ट्रक्शन बंद थई गया हता। पण समुद्रनी अंदर आ ब्रिज ऊभું करવું એટલે तकलीफ तो थाय। तो ते केवी रीते आ 5 वर्षमां ब्रिजનું निर्माण थयुं ते समग्र जानकारी जे छे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोते लई रह्या छे। जे डिजाइन अप्रूव करवामां आवी हती ते ज डिजाइन एज इट इज बनाववामां आवी छे। तो एकदम बारीकीथी निरीक्षण प्रधानमंत्री आ ब्रिजનું करशे। 3 अलग अलग पॉइंट जे छे ते पीएम माटे आ ब्रिज उपर बनाववामां आव्या छे। 2.5 किलोमीटरना आ ब्रिजमां 3 अलग अलग पॉइंट बनाववामां आव्या छे, ज्यां पीएम पोते जशे अने त्यांथी तमाम सुदर्शन सेतुનું निरीक्षण कर्या बाद ज्यारे 1 वागे द्वारका अने सौराष्ट्રના લોકોને સંબોધિત કરશે द्वारका મંદિરની પાછળ આવેલા સભા સ્થળેથી, તે દરમિયાન
ક્યાંક ને ક્યાંક આ સુદર્શન સેતુનું જિક્ર જે છે તે પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનમાં જરૂર જોવા મળશે અને આ તસવીર તેમને પોતે જોઈ હતી જે સુદર્શન સેતુ અહીંયા સુદર્શન ચક્રની સાથે જે મૂકવામાં આવ્યું છે તે પોતે આ તસવીર જોતા બેટ દ્વારકા મંદિરની તરફ ગયા હતા અને મંદિરથી બ્રિજની તરફ ગયા હતા. એટલે જે રીતે સજાવટ કરવામાં આવી છે, જે તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે, આ તૈયારીઓ આવી જ રીતે જ્યારે લોકો માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે અને શ્રદ્ધાળુઓ જ્યારે પદયાત્રા કરીને આવશે કે પછી પોતાના વાહન સાથે બેટ દ્વારકા આવશે ત્યારે આ જ તસવીરો તેમને પણ જોવા મળે તેવી ખાસ પ્રકારની તૈયારીઓ જે છે તે કરવામાં આવી છે અહીંયા અને તેનું જ નિરીક્ષણ જે છે તે પ્રધાનમંત્રીએ હાલ કર્યું પણ છે અને હાલ બ્રિજ ઉપર તે પહોંચી ચૂક્યા છે.